Now we will Okay, be ma'am. to the feedback part. Okay. Yeah, ma'am. So first of all, I want to tell that the way you was in the last interview and the way you was today, there is a great difference. Okay, you have a Okay, good thank you, ma'am. answer the questions. Okay, actually, Yeah. we need courage to face the interview. Okay, that was just showing in your face that today you are having that courage. Okay, that you will be just facing the interview. Okay, see, Yeah. somewhere you were still lacking, but it was not coming in your face that you are lacking in this question. Okay, you were just saying endlessly that you have to answer in any cost. That was a great zeal, actually. Okay, so first of all, that's a great thing that you just overcome with all the things I mentioned in the last feedback part. Okay, moving to the part, let me tell you that the way you introduced yourself was completely good. Okay, I will be mentioning, I am not able to just counter some questions in the introduction part. It was completely just convincible. What I can say, it was just below my level with what I was thinking about you. Okay, so that was a great thing. Moving to the part of Byjus, what you know about Byjus, that was also very great. Okay, you was just answering me endlessly. Okay, so this happens. Actually मैंने आपको बीच में रोका नहीं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा, आप बोलते ही चले जा रहे थे. मैं आपको चेक कर रही थी कि यस यू हैव दैट ज़ील, आप सिर्फ बोलते जा रहे थे. वो जो एचआर होंगे ना वो आपको रोकेंगे. ओके कि आई गॉट योर पॉइंट. ओके, सो ये आंसर होना चाहिए, ये ज़ील होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे कि मेरे पास इतनी चीजें हैं कि मैं आपको बताते ही चला जाऊंगा पर आप सुनने में बोर हो जाएंगे, पर मुझे बायजूस के बारे में सब पता है. Okay, that's a great Okay. thing actually. Moving to the part sales scenario. Okay. So I asked you some questions, just like my first question was, you have to sell me a fish. That was Yeah. a great approach, the way you just did. Good. Next question was, suppose I'm a labor and you have to convince me, okay, to buy a smartphone. That was my question. Okay. In that, just you countered me the question, ma'am, why you are here, what is your budget, okay, what you do, ma'am. Okay, you just countered the question. In that question also, that was very good. Okay, the today's interview was enough good. I can compare and I can say you have that confident. See what happens in the whole interview, the HR sees how much confident you are, how you are answering the question. ओके अगर आप यहाँ पर अटक जाएंगे ना तो आपको वो आगे की तरफ इसलिए नहीं लेके जाएंगे, जब आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आप क्या बायजूस के प्रोडक्ट को सेल करेंगे. इट हैपेंस. ओके, बट आज आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया. ओके, तो या मूविंग टू द पार्ट, आपने लेबर वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया. ओके, एकेडमिक पार्ट में यू वर स्टिल लैकिंग. ओके, यू वाज जस्ट थिंकिंग जो भी मैंने बोला वो सही बोला कि गलत बोला, आई डोंट नो, मैंने बोल दिया. ओके, Okay, ma'am. अगर आपने बोल दिया है ना शुभम तो सोचना नहीं है. ओके, बी कॉन्फिडेंट कि मैंने बोल दिया. ओके, माइट बी इट हैपन कि उन्होंने ढंग से नहीं भी सुना हो या सुना भी हो, बट कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि ठीक है. ओके, बोला. ओके, ऐसे सोचो मत. आप आंसर देने के बाद सोच रहे हो तो सामने से समझ में आ रहा है दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग द एकेडमिक पार्ट. यू वर जस्ट लाफिंग. डोंट डू दैट. ओके, आपके पास नोट्स हैं, आई थिंक यू शुड गेट प्रिपेयर फॉर दैट. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है. ओके, सो यू वर Yes. लैकिंग इन एकेडमिक पार्ट ओनली, सो यू शुड जस्ट वर्क हार्ड ऑन दिस.